बेटा चलो उठो उठो उठो। हाँ देखो क्या है बेटा। मैं अभी रॉकिंग चेयर में बैठ के मज़ा ले रही हूँ इस हाउस के बाहर। है ना डल? हाय एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम लोग जा रहे हैं एक फार्म हाउस में। आप लोगों को दिखाते हैं कि यहाँ का फार्म हाउस कैसा है। तो चलो वहाँ मिलते हैं। सो दिस इज़ द पार्किंग लॉट ऑफ द फार्म। और हम लोग जा रहे हैं आर्डेनवुड हिस्टोरिक फार्म देखने। अभी पार्किंग लॉट में कोई पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, इट्स फ्री। This farm opens every Tuesday to Sunday from 10 a.m. to 4 p.m. and also open during New Year's Day, Memorial Day, July for Labor Day and close on Thanksgiving and Christmas. But before visiting the farm, just check the official website for the details. इन लोगों ने बोला कि आज फ्री डे है तो हमें टिकट से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। The entire park includes a large forest, a farm and a mansion now called the Peterson House. At the time of Peterson's stay, that was in 1895, the ranch was 3,000 acres, that is one of the largest in the area. Today, we will take you on a journey back in time to experience life on a 19th century farm. कितना मज़ा आ रहा है व्यू का, आपको बता नहीं सकती हूँ। ट्रीज, ग्रीनरी ग्रीनरी, काफ़ी मज़ा आ रहा है, काफ़ी मज़ा आ रहा है। This farm was established in the 1850s by the Peterson family. They were known for their innovative farming techniques and warm hospitality. नहीं कुछ तो प्लान्स है। डियर पार्क, डियर पार्क है यहाँ पे। तो हम लोग जा रहे हैं अभी आगे देखने के लिए क्या है। This historic farm consists of the Ardenwood station, the former Ohlone village and burial site, a blacksmith shop, an area with farm animals, a Peterson house, and a gazebo. Ardenwood Historic Farm is a regional historic landmark in Fremont, California. It is managed by the East Bay Regional Park District. काफ़ी बड़ा लग रहा है मुझे, साइड से बहुत वॉक करना पड़ेगा यहाँ पे, और थोड़ा थोड़ा हवा भी चल रहा है ना, तो फिर देखो स्काई, देखो कितना मज़ा आ रहा है। यहाँ पे कुछ डिटेल्स दिया हुआ है डियर पार्क के बारे में। So we are heading towards the train ride. हम लोगों को थोड़ा टाइम रुकना पड़ेगा क्योंकि ट्रेन अभी तक आया नहीं है, तो हम लोग थोड़ा वेट कर रहे हैं अभी। तो ये है डियर पार्क स्टेशन, यहाँ पे थोड़ा वेट करना पड़ेगा। Okay. And it's all meant for little kids. Okay. Yeah, nothing scary for the honey train. It's all just really fun. We have a hold up with cowboys. The train gets held up. Yeah. And that kind of thing. It's the only thing like people can watch this. It's not just for like that's the only thing for हाँ बेटा चलो उठो उठो उठो। हाँ देखो क्या है बेटा। अरे उठो उठो उठो। हाँ अरे बाप रे, उठो बेटा उठो जल्दी। ट्रेन, हाँ बेटा उठो जल्दी। Finally, we board the train to take a scenic ride around the farm.
The conductor said, "All aboard, please find your seats and keep your arms and legs inside the train at all times. Our adventure is about to begin." These boxes are beehives or what? Huh? Just now they told, right? Yeah. These are the beehives, right? Yeah. Today, Ardenwood Historic Farm continues to be a popular destination, providing educational programs, tours, and events that celebrate the rich cultural heritage of the region. The Patterson House, the historic trolley barn, and the Sunol Water Temple are just a few of the attractions that transport visitors back in time, providing a unique and immersive experience of California's agricultural history. This Ardenwood farm was once owned by George and Clara Patterson, a prominent couple during that time. They managed the farm and raised various crops and livestock. The Pattersons primarily cultivated grains like wheat, barley, and oats. They also had orchards with fruit trees like apples, pears, and cherries. हमने तो ट्रेन राइड कर लिया। अभी हमको थोड़ा आगे जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या है। तो ये भी कुछ है, जापानीज टी हाउस। ओके, तो ये देखो ट्रैक्टर। ओके, कैन यू सी द ट्रैक्टर? कितना अच्छा लग रहा है ना। ऐसा लग रहा है कि मैं असम में हूँ। सब ग्रीन ग्रीन ट्रीज है। Now next visit to the farm's animal area. Here we have various farm animals like cows, sheep, and chickens. Now, this historic farm owned by the city and operated by the Park District. The original owner was George Patterson. The Patterson House was built in 1857. This magnificent Victorian mansion stands as a testament to the affluent farming lifestyle of the era. यहाँ पे इस एरिया पे चिकन्स रखा है, काफ़ी अच्छी तरह से साफ़ सफाई से मेंटेन करके अच्छे से रखा है। यहाँ पे तो कुछ था ना, मिल्क हाउस। और इस एरिया पे टर्के रखा है। यहाँ पे मुझे 3 बार्स दिखाई दिया है अभी तक।
Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O, and on that farm he had some chicken, E-I-E-I-O. With a cluck cluck here, with a cluck cluck there, here cluck, there cluck, everywhere cluck cluck. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O-O-O. है ना दाल? ये मुझे लग रहा है बेरीज है, आई थिंक। एक बड़ा सा घर है ये। हमारी आरना को देखो, उसको मज़ा आ गया इसीलिए एकदम वॉक कर रही है। आरना, बेबी आरना, look at me. Now, as we continue our journey, you will notice that Ardenwood also features a beautiful Victorian mansion where the Patterson family resided. Let's head there next. Anna. मैं अभी रॉकिंग चेयर में बैठ के मज़ा ले रही हूँ इस हाउस के बाहर। काफ़ी अच्छा लग रहा है। थोड़ा वॉक किया तो मैं थक भी गई हूँ, तो अभी मज़ा कर रही हूँ। और आरना को देखो क्या कर, सी आरना व्हाट शी इज डूइंग। आरना, बेबी आरना, बेटा स्टैंड अप। ये घर के भीतर तो मैं दिखा नहीं पाई, साइड से अलाउड नहीं है। जितना हो सके मैं आपको बाहर से ही दिखा रही हूँ। यहाँ पे पैटरसन हाउस के बारे में मेंशन किया है और काफ़ी अच्छा भी लग रहा है यहाँ बाहर। ये जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ ये एक्चुअली आपको कहाँ जाना है, किस तरफ जाना है, एग्ज़िट कहाँ होना है, सब कुछ दिया है, देख के आपको चलना है। और ये है पैटरसन हाउस का फ्रंट व्यू, आप लोगों को दिखा रही हूँ। काफ़ी सुंदर है, देखो ना, काफ़ी अच्छा लग रहा है। आई थिंक ये काफ़ी पुराना गैरेज है जो कि बहुत अच्छी तरह से मेंटेन किया हुआ है, देखो। और ये है टैंक हाउस। और इस एरिया पे गोट रखा है, यानी कि बकरी रखा है यहाँ पे, और काफ़ी अच्छा से रखा है, काफ़ी साफ़ सफाई से रखा है ना। कैसा लग रहा है तुम्हें? बहुत मज़ा आया ना? आरना को फर्स्ट टाइम देखने को मिला है, काफ़ी एंजॉय करिए। ये शिप है, सिल्की, ये शिप है। और यहाँ पे शिप रखा है। हमारे आरना ने तो काफ़ी एंजॉय किया है यहाँ आके, मुझे भी अच्छा लगा। यहाँ पे लिखा है लाइफ इज़ बेटर ऑन द फार्म। सही में काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे आके। काट लेती है अभी तो शूज काटा था आरना का, देखो। काट लेते बेटा, हाँ मुंह में आते बेटा। ये है वाइट टर्की। यहाँ पे बर्थडे और पार्टीज़ के लिए है, तो मैं आपको अच्छी तरह से तो दिखा नहीं पाया क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे पार्टीज चल रहे थे, तो अच्छा नहीं लगा भीतर जाना। Showing the direction of cafe, restroom and farmyard granary. And with that, our tour of Ardenwood Historic Farm comes to an end. I hope you have enjoyed this journey through time and gained a deeper appreciation for the farm's history. Thank you for joining me today. See you in the next video. Till then, bye-bye.